Hello everyone, welcome back to the channel. This is saha, your host. Today we are going to discuss about पापा का प्यार फिक्स डिपॉजिट। फर्ज कीजिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, आपको सेव करना है फॉर द फ्यूचर, आपको रिस्क भी नहीं लेना है एंड you want your money to grow. In this situation, today in this video we are going to analyze with historical data whether fixed deposit still plays a good role in 2023 to invest your money. चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फील फ्री टू कमेंट आउट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। पहले समझते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड बैंक विल रिटर्न योर डिपॉजिटेड मनी विथ द इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रेट जब आप फिक्स डिपॉजिट बैंक पे करते हो उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है। 6%, 5%, 4%, 8% कुछ भी हो सकता है। दैट विल बी डिसाइडेड एट द बिगिनिंग व्हेन यू आर डूइंग योर एफडी इन द बैंक और इन द एनबीएफसी। There is a quite few benefits of fixed deposit. सबसे बढ़िया जो बेनिफिट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का which is you will get a assurity, right? इकोनॉमी कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन रेट कुछ भी हो जाए, आपको एक पीरियड के बाद जो पैसा आपने बैंक पे डिपॉजिट किए हो you will get that amount back. So it is a totally risk-free investment instrument. Number 2 benefit is for the senior citizens. Usually after retirement or senior citizen जब अपना खुद का retirement money in form of fixed deposit बैंक के पास रखता है तो बैंक usually gives a higher return around 0.5 to 1% depending on the different bank. That is the second benefit for senior citizen. Third benefit is the tenure. The tenure is very flexible. You can do fixed deposit from like 6 months to 5 years. और फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। आपको अगर पैसे का कोई तंगी है या इमरजेंसी में पैसा विथड्रॉ करना है, यू कैन गो इन योर बैंक और फ्रॉम योर मोबाइल बैंकिंग यू कैन विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम योर फिक्स डिपॉजिट। नंबर 4 बेनिफिट इज इट इज अ वेरी डिपेंडेबल इंस्ट्रूमेंट। आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी में बेस्ड ऑन योर फिक्स डिपॉजिट आपको लोन मिल जाएगा अप टू 95%। अभी चलिए बेनिफिट तो हो गया, तो बेनिफिट होगा तो उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होगा। द नंबर 1 ड्रॉबैक इन माय ओपिनियन इज देयर इज नॉट मच ऑफ टैक्स बेनिफिट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट। Your fixed deposit amount will be considered under the other sources of income in your ITR. The second drawback is the fixed interest rate. Now, this fixed interest rate could play in a good way as well as in a bad way. अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा एक टाइम पे किए हो जहां पे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट वाज और द इंटरेस्ट रेट वाज वेरी लो, so going forward in the future when the inflation would rise and comparing that pace of your inflation आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट was low. So in this kind of situation, it is a very bad idea to invest in fixed deposit. Number 3 drawback in my opinion is the locking period. आपका fixed deposit एक particular time के लिए lock हो जाता है and after that if he wants to withdraw your money, so there is a 1% penalty charged by the bank. And number 4 drawback, which is debatable. For some people it's not a drawback, for some people it's a drawback. The interest rate compared to any other investment instrument is quite low. चलिए ये तो हो गया फिक्स डिपॉजिट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है। अभी हम लोगों का वीडियो का मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है और 2023 में आपको क्या एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए समझते हैं। एक्सेल में मैंने कुछ डेटा डाउनलोड किया है फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट दैट वी विल यूज टू एनालाइज our decision. Okay, before that, there is a very important thing to understand from this investment perspective.
Okay, चलिए एफडी तो we need to compare that FD interest rate with something, right? And that we usually compare with inflation rate. तो पहले हम लोग समझेंगे बहुत ही ब्रीफ में कि इन्फ्लेशन होता क्या है एंड इन्फ्लेशन से एफडी रेट में क्या फर्क पड़ता है। सो इन्फ्लेशन या महंगाई होता क्या है जब ऐसा सिचुएशन इकोनॉमी में आता है व्हेन योर डिमांड is very high compared to your supply is not that great. So supply ज़्यादा नहीं है, डिमांड ज़्यादा है कंज्यूमर का, तो इन रिजल्ट क्या होगा, your inflation goes up. And to control that situation of inflation in any country, the central bank plays a great role. What RBI does here is basically they increase द इंटरेस्ट रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इसके चलते हुए तो आप लोगों का होम लोन जो ईएमआई है या पर्सनल लोन, आपका कार लोन, तो ये सब लोन का जो ईएमआई हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो विद द इंक्रीज ऑफ द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम आरबीआई फॉर कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द कॉर्पोरेट्स, द बोरोइंग रेट और so your free cash flow would be reduced by the increase of the interest rate from the RBI. तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ईएमआई बढ़ जाएगा, आपका ईएमआई बढ़ेगा तो आपका हाथ पे जो फ्री कैश रहता है वो कम हो जाएगा एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट? सो इन दिस सिचुएशन विथ इंक्रीज ऑफ योर होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, the fixed deposit rate also increases, right? So the FD also increases. So the relation here is basically when your inflation goes up, right? So in the following preceding financial years, your FD rate also will goes up. And vice versa, when your inflation goes down, RBI will cut the interest rate and interest rate नीचे आ जाएगा, तो FD का भी interest rate नीचे आ जाएगा. That's how the whole economy get controlled by the RBI for handling the inflation. So if you can see in this chart from year 2002 to 2021, which is the last 20 years, so ये जो आपका inflation का time है, basically ये 2000 से लेके ये 2000 से लेके up to 2007, this inflation rate is usually around 5%, right? Whereas in the from year 2009 to 14, right, ये ईयर पे आपका inflation was more than 8%. In last few years from 2015 to 20, the inflation rate was again 5% around, and that is how inflation goes up. Sometime it goes down. चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहले ये वाला सिचुएशन देखते हैं, which is from 2009 to 2014. ये सिचुएशन पे आपका महंगाई बहुत ही ज्यादा था, 8 to 10%. तो as per the concept that we understood लास्ट में इन्फ्लेशन का, हम लोग ने क्या देखा कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है. सो इफेक्टिवली क्या होता है, आपका एफडी का इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए. सो 2008 में जब हम लोग का ये मेजर क्रैश हुआ था, आफ्टर दैट द इन्फ्लेशन गोज अप. सो दिस इज द डेटा. तो ये आपका हो गया 2010 से 2014 तक data. So clearly I have highlighted here in a square box, you can see the interest rate for FD was around 8 to 9%. Sometimes it goes even up to 9.2%. So you can see that. So see the inflation in 2009 was close to even more than 10%. So definitely to control this inflation, RBI will increase the interest rate. और आप इधर देख पाएंगे कि
10-11 का फाइनेंशियल ईयर में आपका इंटरेस्ट रेट वाज अराउंड 8.5 to 9%. Next year it was even more than 9%, and with decreasing number of inflation, the interest rate of FD also got decreased. So if some people have invested their money in this period of time in FD, ultimately he is a gainer. So similarly, this is another time when the FD rate was quite high. So ये जो मौका होता है, कभी कभी कुछ टाइम पे हम लोगों के पास मिलता है ये सब मौका. If you can invest in this situation, then it's a good option to invest. Now to prove my point, and it is very evident over the internet, we have seen that FD usually cannot beat the inflation rate in most of the occasions, right? Now, how I see this analysis is a little different. Let me prove my analysis. This is another data. It gives the same inflation rate in a tabular fashion. This is the data that I have used to plot this graph. So let me bring this graph down here. Now if you see this data carefully, from 1960, right, from 1960, if you see, the average inflation in India was around 7.3%. So your average inflation is around 7.3%, correct? Similarly, अगर आप 2011 से 2021 तक देखेंगे, ये जो 10 साल का इन्फ्लेशन है, this also comes around 6.6%. So हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है, एवरेज इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है, एवरेज इन्फ्लेशन का नंबर है, इट वेरीज फ्रॉम 6 to 7% इन एन एवरेज. कुछ ईयर में ज्यादा हो सकता है, कुछ ईयर में कम हो सकता है. अभी दिस इज हाउ आई थिंक. इफ आई इन्वेस्ट माई मनी इन अ फिक्स डिपॉजिट, राइट, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, if the interest that got generated in the FD after your 3 or 5 years of your tenure, if it can beat the average inflation rate in this period, then it is a good instrument to invest, provided you are not willing to take any risk on your investment. So first कीजिए, आपने 2011 में, ओके, 2011 में 5 साल के लिए, 5 years के लिए एक FD किए थे फॉर अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज. ओके, सो 2011 में आपको करीब 8.5-9% के आसपास मिला होगा, राइट? एंड 3 या 5, मान लीजिए 5 साल के लिए FD आपने किया होगा. सर 2011 से 2011 से 2016 में आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा. सो इन दिस 5 years you will get this 8.5% of your total interest. So if I consider from year 2011 to 2016, in this 5 years, the FD rate I got is around 8.5%. The average inflation rate in this period was around 7.8%. So for me, अगर मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में मुझे रिटर्न मिलता है, then I'll be happy because I'm not taking any risk on that money. Now it is a different discussion के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, that is different discussion we will discuss in a separate video. But for this video, to prove this concept, अगर आप परफेक्टली एनालाइज करके आपका फिक्स डिपॉजिट ठीक ठाक पीरियड में किए हो, then you will be a gainer. If you have invested in fixed deposit in this period of 2001 to 16 or in the period of
2000 to 2003, right? And there could be some more. So in this year 2023 as well, most of the FDs in good bank or NBFC, it is providing around 8 to 9%. आपको 8 से 9% इंटरेस्ट रेट पे एफडी मिल जाएगा एनबीएफसी या बैंक पे. And looking at the data and looking at this data of inflation historically, and ये डेटा देखने के बाद मेरा यही एनालिसिस है कि नेक्स्ट 5 years के लिए भी द इन्फ्लेशन नंबर वुड बी अराउंड 7%. मोटा मोटा हिसाब में ये मान के चलिए कि 7% के आसपास आपका इन्फ्लेशन रहेगा. And on the other hand, you are getting 8 to 9% of return in FD. So ये मान के चलेंगे कि आपको आपका पैसे में आपको आपका सेविंग्स में रिस्क नहीं चाहिए, मनी भी ग्रो होना चाहिए. Then in 2023 fixed deposit could be a suitable option for you. So in this video हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग एनालाइज कर पाएंगे एफडी को. अगर आपको कोई भी ईयर 2023 है, but in future maybe you see this video in 2024 or 25, on that period of time भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है एफडी में, I hope this video would help you to analyze your data and to come to a correct decision. And that is the purpose of this channel, to literate every people on the financial journey, precisely on their own personal finance journey. हम लोग को कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंशियली. We will make a correct choice by analyzing the facts. So this concludes today's video. I hope you like the video. If you like this video and you are watching this video till now, please like the video and subscribe the channel to get more videos like this. So we'll see you guys in the next video. For today, this is Saurabh Saha, your host, signing off.